So let's begin our discussion of single source shortest path algos with the simplest one, which is BFS, breadth first search. In fact, I'm going to discuss BFS as a general traversal technique, and after that, we will see कि उसमें क्या modifications या slight additions करके आप उसको as a shortest path algo use कर सकते हैं. So हम शुरू करते हैं ये BFS. लेट मी रिमाइंड यू कि BFS कैसे काम करता था. आपने BFS डेफिनेटली डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा है, एंड आई थिंक वहाँ पे शायद आपने इसको लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल के नाम से पढ़ा हो. वहाँ पे हम इसको लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम वहाँ पर ट्रीज के साथ काम कर रहे होते हैं और ट्रीज में लेवल का कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली. अब हम जनरल ग्राफ पे एक BFS करने वाले हैं. सो वी विल नॉट कॉल इट लेवल ऑर्डर. We will just say it's breadth first search. So let's say I begin with A, and again I'm going to break ties in the alphabetical order. So how does BFS start? सबसे पहले हमारा जो source है इस केस में वो A है. So ये हमारे BFS tree की beginning होगी, okay? और just to remind you, BFS क्या करता है, वो अपने जितने भी A के neighbor हैं, A के जो immediate neighbors हैं, जो कि यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, E है, D है और G है, ये इन तीनों को एक क्यू में रख देता है. इसकी वजह ये होती है कि मैं ये चाहूंगा कि A को प्रोसेस करने के बाद मैं A के इमीडिएट नेबर्स को प्रोसेस करूं, और क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर मुझे पता है कि प्रोवाइड करता है. तो मैं A से जो नियरेस्ट चीजें हैं, द क्लोजेस्ट थिंग्स टू A, विच आर इट्स क्लोजेस्ट नेबर्स, उनको मैं प्रोसेस करना चाहता हूँ आफ्टर प्रोसेसिंग A. And that is also exactly the demand of single source shortest path algo. But let's see. So what I'm going to do here is make a queue here, okay? ये queue एक FIFO queue है. आप लोगों को ये बनानी आती है, implement करनी आती है. So इस FIFO queue में शुरू में तो हम सिर्फ A को बजाते खुद A को NQ कर देंगे. तो जब A इसमें से DQ होगा, तो A अपने neighbors को इसमें NQ कर देगा. और ये neighbors किसी भी order में NQ हो सकते हैं, but we are going to follow the alphabetical order, which is D, E, and G. Okay? और अब हम बेसिकली जो हमारी एल्गोरिथम की इटरेशंस हैं, एवरी इटरेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वन DQ फ्रॉम द क्यू एंड वन और मोर NQs इनटू द क्यू. तो जो DQ होना है वो हमारी वो नेक्स्ट नोड होती है DQ, जो कि हमारे ट्री का शॉर्टेस्ट पाथ ट्री में इसको भी नहीं कहता, BFS ट्री का पार्ट बनती है. तो A जो है वो हमारे BFS ट्री का पार्ट बन गया क्योंकि पहली इटरेशन में DQ हुआ था. अब नेक्स्ट इटरेशन में जो चीज DQ हो रही है वो D है. तो D हैज बिकम द नेक्स्ट थिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्री. नाउ जस्ट बी केयरफुल कि ये जो मैं एरोज ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो मैं ट्री बना रहा हूँ BFS ट्री, ये एक्चुअली कैसे मेंटेन्ड है. जब हमने DFS के केस में, डेप्थ फर्स्ट सर्च के केस में जब इस ट्री की बात की थी, उसका भी एक ट्री था. उसके ट्री के बाद की जब मैंने बात की थी तो मैंने ये बात नहीं की थी कि आप एक्चुअली कैसे मेंटेन करेंगे इस ट्री को. लेकिन कोड में जब हम कोड लिखेंगे, हमें ये ख्याल रखना है कि यहाँ पर वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो एज है इसकी कहीं इंफॉर्मेशन रखी जाए कि ये हमारा BFS ट्री बन रहा है, क्योंकि ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ ट्री भी बन जाएगा एट द एंड. सो आई हैव टू हैव दैट इंफॉर्मेशन. सो वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इन्फॉर्मेशन हम ऐसे रखते हैं कि मैं अगेन एक ग्लोबल एरे रखूंगा, जैसे विजिटेड की एरे होती है फॉर इंस्टेंस. तो एक ग्लोबल एरे रखूंगा और उस ग्लोबल एरे का नाम PAR पेरेंट होगा. और जब फॉर इंस्टेंस मैंने A के सारे नेबर्स उठाए, जैसे कि E, D और G मैंने उठाया, और इनको जब मैंने NQ किया, तो उसी वक्त मैं इनके जो पेरेंट्स हैं, इनका जो पेरेंट है वो मैं सेट कर दूंगा. तो पेरेंट ऑफ D जो है वो सेट हो जाएगा A, बिकॉज A की वजह से ये NQ हुआ है. इसी तरह पेरेंट ऑफ E जो है वो सेट हो जाएगा कि ये भी A ही है. इसी तरह पेरेंट ऑफ G जो है वो भी सेट हो जाएगा कि वो भी A ही है. तो ये पहली इटरेशन में ये तीन पेरेंट्स सेट हो जाएंगे. इसी तरह फिर अगली इटरेशन में, अब अगली इटरेशन में क्या होना है,
डी चूंकि डी क्यू हो गया है, तो डी क्यू होने के बाद फिर जो डी के नेबर्स हैं, और यहाँ पर ये भी याद रखिए कि हमारी विजिटेड की अरे यहाँ भी काम कर रही है। ए विजिटेड हो चुका है, उसके बाद जो ई जी और डी हैं, इनको भी मैंने विजिट कर लिया है। विजिट मैं इनको कैसे मार्क करता हूँ इस केस में? विजिट मीन्स दैट आई हैव एनक्यूड द नोड्स। सो ई चूंकि एनक्यू हो चुका है, आई डोंट वांट इट टू बी एनक्यूड अगेन। D should not be enqueued again, and G should not be enqueued again. So as soon as I do enqueue, I mark the parents, but I also mark the visited. कि अब मैं इसको दोबारा इसको मैं enqueue नहीं करूँगा. Okay. So um, so basically D, E और G तो मौजूद है, तो D अपने जो नेबर है C, उसको अब यहाँ पर उसका एक ही नेबर है, तो वो C को यहाँ पे enqueue कर देगा, right? So next time जो चीज DQ होनी है, that thing is E. Okay. So when E is DQ, उसका पेरेंट हमने मार्क किया हुआ था A, तो वो E यहाँ आ जाएगा as the child of A. Okay. और E जो है, चूंकि हमने DQ किया है, तो अब इसके अगर हम नेबर्स देख लें, तो उसका एक नेबर F है और इसका एक नेबर I है। तो बोथ ऑफ दीज आर अनविजिटेड, मीनिंग कि अभी तक क्यू में नहीं है, यानी हम मार्क कर दिए। सो आई विल इंक्लूड F here and I will include I here. Alphabetical order. Okay. Right. And there are no other neighbors of E. Now I look at G. Okay. This is DQ. So इसका भी parent मैंने mark कर दिया था A. So G is once again here, and this is the situation. Now since G is DQ'd, we will look at its neighbors, its unvisited neighbors. Now look, G has two neighbors. One is F, which is already visited, so हम इसको NQ नहीं करेंगे. And the other is B, which is not visited, so ये NQ होगा. Okay. और ये बात अब आप याद रखिएगा कि B का पेरेंट जो है वो G अब मार्क हो गया, राइट? और पीछे भी हम पेरेंट्स साथ साथ मार्क हम कर रहे हैं, राइट? सो B भी विजिट हो गया। और अब जब हम NQ करते हैं, DQ करते हैं C को, सो C जब हमारा NQ हुआ था, तो उसका पेरेंट हमने मार्क कर दिया था, दैट पेरेंट, आई एम सॉरी, ये C को भी हमने यहाँ पर विजिटेड मार्क किया होगा। तो वो हुआ था NQ D की वजह से, उसका पेरेंट यहाँ पर हमने D नोट किया होगा इस तरह से। ओके। और फिर हम DQ करते हैं F को। F का एक ही नेबर था, बट दैट हैज ऑलरेडी बीन विजिटेड, तो उसका हम कुछ नहीं करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट थिंग वी DQ is I. Okay. I has an unvisited neighbor. It has a visited neighbor A, so we don't do anything there, but it has an unvisited neighbor H. So this H is now visited and it goes to the Q. And then we get B. Okay. B, and now there is nothing left unvisited, right? So B भी निकलेगा, B का कोई neighbor I है लेकिन वो visited है, so B itself was the child of G. We had visited it through G. So this will be, B is here. Okay. ये DQ हो गया। फिर H DQ होगा, और जो H था, एक्चुअली मैंने I को यहाँ से DQ किया, and I did not add I here. I'm sorry, making some mistakes. I DQ हुआ था, तो वो ये child बना था। H जो है वो फिर यहाँ पर जब DQ होगा, तो H will become the child of I. If there are any errors, I hope there are no errors. Actually, there are none. Right. So this is the tree I have. And actually, this is a single source shortest path tree. Okay. It just makes sense कि ये है एक single source shortest path tree, because आप किसी भी नोड के बारे में अगर ये सोचना चाहें, अगर आप इस प्रूफ की करेक्टनेस देखना चाहें, A से स्टार्ट करके आपको जो पाथ मिला है H तक, फॉर एग्जाम्पल, उसकी लेंथ है 1 2 3 4, and this has to be the shortest path. Okay. If it was not the shortest path, let's say कि इसकी जो लेंथ है वो H तक के पाथ की लेंथ 4 नहीं है बल्कि 3 है,
अगर ऐसा होता तो फिर हमें इस लेवल पे, थर्ड लेवल पे, हमारा जो एज नोड है वो हमें मिल जाता थ्रू अ चाइल्ड ऑफ ए, क्योंकि जो चाइल्ड ऑफ ए हैं वो तो हमने क्यू में डाले हैं, उनको एक एक करके हटाया है, सो उठाया बीच में से। सो दैट मीन्स के बिकॉज ऑफ द फीफो क्यू जो हमने यहाँ रखी हुई है, हमें जब हम पहली दफा एज तक पहुंचेंगे तो वी मस्ट रीच देयर थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ। लॉन्गेस्ट पाथ नहीं हो सकता, लॉन्गेस्ट नहीं मतलब नॉट शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हो सकता। So we start from A, we look at the nearest things to A. These are the first things to come out of the queue. Okay. The next things to come out of the queue are the children of these things. So they must be the second nearest to A. And then the third batch of things to come out of this tree, of the queue, sorry, are the children of these things, and so on and so forth. So definitely we will get to a node through its shortest path. Okay. Another way of saying it is that it is not possible to extract anything from the heap. Okay. To actually, no, sorry, it is not possible to enqueue anything into the heap before something that is actually nearer to A. मतलब अगर A से let's say कि आप दो नोड्स देख लें कि एक A है आपकी स्टार्टिंग और एक X है और एक Y है। लेट्स से कि जो X है वो A से नियरर है और Y जो है वो दूर है। तो जैसे हमने एल्गोरिथम बनाया है X Y जो भी हो, X must be enqueued before Y, okay, and therefore X must be dequeued before Y because of FIFO, and therefore X will have a shorter path from A than Y. It can't be that Y is dequeued before X and so on. So we have the shortest path. इसमें further addition क्या होंगे? Let's write the pseudocode for this and see it there. So let's say this is my BFS algo, और अब मैं करूंगा ये कि मैं BFS algo के साथ ही shortest path algo, जो shortest path का addition है वो मैं कर दूंगा. तो this is single source shortest path BFS. Okay. Lot of capitals here. So single source shortest path algo using BFS. इसमें आपके पास एक ग्राफ आता है, ये एक अनवेटेड ग्राफ इसका होना जरूरी है। okay? और आपने हमेशा हर सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गो में उसका सोर्स बताना है कि कहाँ से आपने शुरू करना है अपने पाथ्स को। जो चीजें हमें इसमें रखनी पड़ेंगी, कुछ शुरू में काम है विच आई एम गोइंग टू कॉल सेटअप, और ये जो सेटअप है ये सारे ही सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स में आपको ये सेम सेटअप करना होगा। सो इट्स बेटर टू जस्ट लुक एट इट वंस कि ये सेटअप क्या होगा। सेटअप इज फर्स्ट ऑफ ऑल के जो पेरेंट्स हैं आपके, हर नोड के जो पेरेंट्स हैं, और मैं यहाँ पर जरा कुछ ऐसी सिंटेक्स यूज करूंगा जो कि स्टैंडर्ड कोई C++ टाइप सिंटेक्स नहीं है, but I hope that you will not mind it. It's pseudocode. So I'm going to assign to this parent just nil. Okay. यहाँ किसी इंडेक्स का ना होने का मतलब है कि सारे ही पेरेंट्स nil हैं, किसी भी चीज का कोई पेरेंट नहीं है, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टार्ट आउट कर रहा हूँ। इसी तरह आई एम ऑल्सो गोइंग टू कीप अ डिस्टेंस array. Okay. And the distance array in the beginning will always be infinity, meaning I have not reached any node yet. So every node is infinity distance from S, okay, except S itself. So when we just start, we're going to start from S. So distance of S itself will be 0, क्योंकि हम S से ही start कर रहे हैं, okay? तो parents हो गए, distance हो गई। अब जो visited की array है, वो हम रख भी सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर चाहें तो we can also use one of these arrays, parent या distance, टू डिसाइड के कोई नोड जो है वो मैंने ऑलरेडी एनक्यू कर तो नहीं दी, क्योंकि मैं ये भी कर सकता हूँ कि जब मैं कोई नोड एनक्यू करता हूँ तो उसी एनक्यू करने से पहले मैं उसकी डिस्टेंस सेट कर दूंगा। तो अगर किसी नोड की डिस्टेंस आगे जाके मुझे नजर आता है कि इन्फिनिटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी एनक्यूड है, तो मुझे अलग से विजिटेड की अरे रखने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर मैं चाहूँ क्लैरिटी के लिए तो मैं रख भी सकता हूँ कि आई डोंट वांट टू यूज डिस्टेंस अरे फॉर एनी अदर फंक्शन, सो मे बी आई कैन यूज अ विजिटेड अरे. So, it's up to you. I'm just going to use the distance array as visited array. Okay. After that, we also need the queue, right? जो queue हमने use करनी है, तो we will create a queue, right? So let me write that line. हम create करते हैं एक FIFO queue को, और फिर queue dot enqueue हमने कर देना है our first node s. S is in queue. यहाँ से हम शुरू करते हैं. और हमारा BFS कब तक चलता है? While not q dot empty. जब तक q हमारी जो है वो empty नहीं हो जाती. Okay? So what do we do? What are the salient steps? In fact, I will encourage you that you should pause the video at this point, and since I have already done a dry run, using that logic, just write down the rest of the code. So every time you know that something is going to be dequeued from the queue, okay, and then whatever you dequeue from the queue, all of its unvisited neighbors, which in this case means all those neighbors whose distance is still infinity, uh, have to be enqueued. And this process continues, and the loop, as you can see, will continue as long as queue is not empty. So you should write this code. So let's begin this process. So सबसे पहले तो you have to dequeue, right? So let's say एक X node है जिसको हम dequeue कर रहे हैं अपनी queue से. So queue dot dequeue. In this case, I am not using the regular peek method. I'm assuming that dequeue also returns the element at the front of the queue. So वो आपके X में पड़ा. The first thing you do is, well, you have to look at all the neighbors of X. उसकी हमारी एक जानी पहचानी लूप है जो हम अपने DFS वगैरह में भी यूज करते रहे हैं, which is that for each XY in E, मतलब Y वो सारे neighbors हैं जिनमें हम interested हैं, okay? और किन neighbors के अंदर हम interested होंगे? वो neighbors जो already enqueue ना हो चुके हो. उसके लिए हमने एक अलग से विजिटेड की अरे नहीं रखी, बल्कि हम डिस्टेंस की अरे को ही यूज कर लेंगे. इफ डिस्टेंस y is infinity, and obviously infinity is probably some very large number, or it may be even -1, whatever value you want to use to represent infinity. Distance, by the way, distance array contains distances measured from the source S, right? So distance y means the distance of y from S, okay? Remember in the beginning we wrote distance S is equal to 0. So if you go to this tree, यहाँ पर S आपका A था, तो यहाँ पर आपकी distance 0 है. इसका मतलब है कि D, E और G पे distance क्या होनी चाहिए? जो इनका parent था, उसकी डिस्टेंस में जस्ट 1 आपने ऐड करना है, राइट? और जो ये डिस्टेंसेस हैं, ये फिर इनके जो पेरेंट्स हैं इस ट्री में, उससे 1 1 1, तो सॉरी ये 2 2 2 हो जाएगा. 2 2 2, इनमें 1 1 1 ऐड कर दिया, और ये फॉर इंस्टेंस 3 हो जाएगा. तो जो नोड पेरेंट बनने वाली है उसमें +1 उसके चाइल्ड की ऑब्वियसली डिस्टेंस होगी. तो यहाँ पर हम ये काम कर देंगे, जब जब डिस्टेंस इन्फिनिटी वाला हमें एक नेबर मिला, तो उस नेबर की जो डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस y जो है, दैट शुड बिकम व्हाट. अब देखिए x की वजह से y आ रहा है, तो x is actually going to become the parent. So what we're going to do is, this thing is just whatever the distance of x was, because x is coming out of the queue, उसमें कोई distance लगी होगी, +1, एक distance उसमें बढ़ा दें. For instance, यहाँ पर अगर x आपका i था और i की वजह से h nq होगा, तो h की जो डिस्टेंस जाएगी वो है i की डिस्टेंस जो है 2 + 1, ये है 3. तो इस केस में x आपका ये है और y आपका ये है. Just to take an example, okay? So this is how distance will be measured and also will be computed, and also you can just here
update the parent. So parent of y is the node through which it is being enqueued. So this is x. Okay. So that's this much. And also, yes, now don't forget that we also have to enqueue this thing. So then q dot enqueue, and you enqueue into it y. Okay. And that's it. I hope I have not missed anything. This is the shortest path algorithm for unweighted graphs. अगर आपका graph unweighted है, single breadth first search with minor additions. अगर आप इसमें देखें तो regular BFS में हमने क्या addition किया? Let me mark that. जो चीज हमने add की है इसमें regular BFS में, वो basically ये lines है. ये information distance और parent की जो information है, और ये setup. Okay, always remember this setup because we are going to use this same setup even in the next algo and after that. Okay, parent array, distance array, and after that, well, we will not always use a queue. The data structure can change, but this much, that's just the setup. Okay. So once this algorithm executes, we get a tree like this, and this is the shortest path tree. Now, if you are using this kind of an algo in a shortest path, in an application where you have to find shortest paths, so you will just compute this path once, and then sometimes when you look at when you are using Google Map, it shows you alternate paths also, right? So maybe you can do some addition to this algo if somebody asks you to find the shortest and the second shortest. So there can be those things, but the simplest form is this thing that you get a shortest path to everything separately. This is how BFS works to find shortest paths. Yes, however, with weighted graph, this will not work. And obviously, I think you can see why that is the case. Let's think of this little example. This is X going to something A, going to something called B. Okay. And ये कह देते हैं कि let's say कि आपने distance लेनी है X से B की. Okay. So BFS is just going to give you this path X and B. And let's say this is the whole graph. BFS will give you XB. That's the shortest path. But now let's say we have weights. And the weight here is 6, and this is 1, and this is 2. Now there is a problem. The shortest path is XAB, but the BFS algo will give you XA, XB. So because breadth first search only looks at every edge in the same way. Every edge is the same for BFS. लेकिन मसला ये है कि जब हम रियल वर्ल्ड एक मैप ही बना रहे हैं तो कुछ सड़कें लंबी हैं, कुछ छोटी हैं, सारी एजेस एक जैसी नहीं हैं, तो we have to take care of the weights. So this simple algorithm is really very limited. Now in the next part, I'm going to talk about how to take care of these weights, but in a very specific situation where we have a directed acyclic graph.